Hello students. Now in this session of Physics 12th, I am going to explain next very important topic, that is electric potential due to dipole. All of you know what is the electric dipole? A system of charges, system of two charges having same magnitude separated by some finite distance. That is called electric dipole. In the first lecture, you have learned electric field intensity, that is another property of electric field due to dipole on the axis of dipole and on the equator of dipole. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है. Now here I am going to calculate electric potential due to dipole, first on the axis and second on the equator, and after that I will discuss electric potential due to dipole on any general point. Okay, तो start करते हैं. First on the axis means electric potential due to dipole, due to dipole. I hope all of you are ready with the notebook and pen. Okay, एक्सिस एंड इक्वेटर तो आपको पता होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, इट इज डाइपोल लेंथ 2l. If you are taking point on here, this point, it's axial point. Axial point. This line joining two point charges. That is the axial line, and point on the axis is called axial point. And perpendicular bisector of dipole, this one, ये है, इसको बोलते हैं equator. And if you are taking point on the equator, that is called equatorial point. I will discuss both the cases one by one, and first I am going to take this axial point. Okay, चलिए, then first draw diagram for electric potential on the axis. On the axis, or you can say axial point, and one more name, याद रखिए, इसको बोलते हैं side on position. Side on position. This one. Okay. चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Let a dipole AB. I have taken a dipole AB made up of minus q plus q of dipole length 2l. Dipole length 2l. ठीक है, एक में डाइपोल लिया है, and take a point P on the axis of dipole. एक पॉइंट P लिया एक्सिस पे, and point P is at a distance r from the center of dipole. From the center of dipole. Okay, here all of you know electric potential is a scalar quantity. Means no direction is there. Means whenever you are calculating electric potential due to positive charge, potential will be positive. Due to negative charge, potential will be negative. हम करेंगे क्या? सबसे पहले जो पॉइंट P लिया है A से, means A means what? Minus Q. Will calculate potential at point P due to minus Q, then due to plus Q, and here you will get V due to minus Q and V due to plus Q, and will add both the potentials. That is total potential at point P due to this system of dipole. Okay. All of you know, if you calculate this distance BP, you will get R minus L. See clearly. And if you take from A, it will be R plus L. This one. ठीक है? आइए, ठीक है? Now, potential at P
ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, इसको हम मान लेते हैं V माइनस, ऐसा मान लीजिए, दैट इज व्हाट 1/4 pi epsilon naught. In the previous lecture I have discussed potential due to point charge. Due to point charge means I am calculating potential at point B due to this point charge minus Q, that is what Q upon, ये डिस्टेंस कितना है R plus L, this is what R plus L, but ये माइनस साइन है ये, okay, then you can write this in this way, minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R plus L, equation 1. This is potential at point P due to negative Q, and due to plus Q, let V plus 1/4 pi epsilon naught Q upon R होता है, but in this case R is what, R minus L, R minus L, equation number 2. See here, I have calculated potential at P due to minus Q and due to plus Q. Now, note नहीं, now electric potential at P due to electric dipole is, उसको V मानिए, ये कैसा है, स्केलर है, तो सिंपली हम ऐड कर देंगे V प्लस प्लस V माइनस, आगे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus L plus minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R plus L. ओके, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको, V is equal to 1/4 pi epsilon naught and Q भी कॉमन है, कॉमन लिया, एंड हियर यू गेट 1/R minus L, और यहां क्या मिलेगा, बीच में माइनस आएगा, एंड 1/R plus L. Like this. Okay. Now Q 4 pi epsilon naught R plus L minus R plus L upon R square minus L square. I have here, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया है, यहां पे ये जब इधर जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने के बाद होगा क्या, दिस L R एंड R कैंसल आउट, A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हुआ क्या, 1/4 pi epsilon naught, पहला काम तो हो गया, L प्लस L 2L हो गया, यहाँ पे Q है तो जाएगा 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये मिल गया पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इक्वेशन नंबर 3. ये है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. अगर आपने ध्यान से इस इक्वेशन को देखा होगा तो यू नो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है 2QL. Therefore, V is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square minus L square. ये है इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, you can take one more case. If dipole is very small, for short dipole, तो क्या हो जाएगा पता है, R is much more greater than L. ये R जो है इससे बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, अब इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर L बहुत छोटा है then square will also be very small, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. देन V is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square. इक्वेशन नंबर
5। आपको अगर कुछ याद होगा तो आपने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाज Q upon R था, Q upon R, but here it is what, R square है। Here V is inversely proportional to square of distance, means इस पॉइंट P पे पोटेंशियल आ गया 1/4 pi epsilon naught P upon R square, this one. It is the magnitude of potential at point P due to this dipole. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, it is axial, तो write VA. A means what? Axial. A means what? Axial. Axial point. Okay. चलिए, तो आपने अभी क्या सीख लिया, डाइपोल से एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है। ओके, पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन। Now we'll discuss on the equator, that is equatorial point. See, equator means what? Perpendicular bisector of the dipole. Perpendicular bisector of the dipole means एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास होती है and perpendicular to the axis of dipole. Okay? Now take a point P on the equator and find the potential on that equatorial point due to minus Q and plus Q on the equator. इसका एक नाम और है ब्रॉड साइड पोजीशन। Broad side position. Okay, I first will draw diagram, then calculate. Again, let AB is the dipole, minus Q plus Q. C, let be the center of dipole. It is L. It is L. ये क्या है? It's equator. Equator पे take a point P. Clear point P. Now join the point with A and B both. ऐसा मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे है। कितना? R डिस्टेंस पे है। Now see triangle PCB. PC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम एंड हियर यू कैन गेट R square plus L square. Similarly here also R square plus L square. Okay. Now calculate potential here due to minus Q, V minus, due to plus Q, V plus, and find its magnitude. Here potential at P due to minus Q, it is V minus is equal to 1/4 pi epsilon naught minus Q upon root R square plus L square, or you can write minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square, or 1/2, equation 1. Okay, and ड्यू टू माइनस Q, सॉरी वो तो हो गया, ड्यू टू प्लस Q। अब जरा देखिए, अब यहां पे हमको फाइंड करना है V प्लस। V प्लस मीन्स 1/4 pi epsilon naught प्लस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 करते क्या है, पोटेंशियल स्केलर है तो पॉइंट P पे जाएंगे तो दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। ओके, नाउ टोटल पोटेंशियल, इट्स प्योर मैथमेटिक्स। टोटल पोटेंशियल एट P, P means what, equatorial point due to dipole is V is equal to V plus V माइनस, पुट द वैल्यू, इसको मैं लिखता हूं इक्वेटर EQ इज इक्वल टू
1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus l square power 1 by 2 minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus l square power 1 by 2. Now see here, जो ये है वही ये है सेम, तो क्या हो गया ये cancel out, 0. Means what? Due to this dipole, potential on equatorial point here is 0. क्या हो गया? 0 हो गया. Means इस लाइन पे इक्वेटर पे आप कहीं भी चले जाओ till infinite, पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा. There is no change in potential. क्यों? Because equatorial point, it's symmetrical for both the charges, plus q and minus q. Means work done due to this here and work done due to this here, both are same in magnitude, but one is positive, one is negative. तो net work done क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन निकलता है कि when you are calculated potential on the axis due to dipole, that is 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square. But same if you are calculating on the equator, it becomes 0. 0 का मतलब है क्या? Thus potential on equatorial point that is anywhere on equator, is 0. कहीं भी जाएंगे पोटेंशियल 0 होता है. आपको पता है क्या ये कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, पता है? और यू कैन से W इज इक्वल टू V इंटू Q. और अगर V 0 है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा. It means what? If you want to displace any charge along the equator anywhere, work done will be 0. इसको आप यहां पे लिख देते हैं, if any charge, या फिर ऐसा लिखिए, that is work done in moving or bringing or displacing any charge along equator is always 0. इक्वेटर के along चार्ज कहीं भी मूव कर दीजिए, वर्क डन हमेशा क्या होगा? 0 होगा. along equator. तो हमने क्या सीख लिया? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, फर्स्ट ऑन द एक्सिस एंड सेकंड ऑन द इक्वेटर. ओके, नेक्स्ट विल लर्न पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल at any general point. Okay, but in this lecture just try to learn these two concepts, and in the next lecture we'll discuss general point.